हाय एवरीवन, दिस इज अंकित एंड मैं लाया हूँ आज आपके लिए नया वीडियो स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स का. सो दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो टेलिंग यू अबाउट ऑल द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द गेम्स दैट आई फाउंड ड्यूरिंग माई प्ले टाइम. मैं ये गेम ख़त्म कर चुका हूँ व्हेन आई बॉट माई PS5 फ्यू डेज बैक. So I'm going to tell you each and everything about the game, like about the mission, about the story. ज़्यादा spoilers नहीं दूंगा. And this is a non-scripted video. So मैं जो भी बोल रहा हूँ it's just whatever is coming in my mind. So it's brutally honest, right? So let's hop in and we'll talk about the game as we play a few missions or just a side activities over and here there. अब यहाँ जहाँ तक देख सकते हैं, मतलब मैंने पूरी मेन स्टोरी पार कर चुका हूँ. 62% मैंने मेन गेम पार कर चुका हूँ. मतलब मेन स्टोरी इज फिनिश्ड एंड जस्ट साइड मिशन मैंने पूरे नहीं पार करे. सो आई हैव अ प्रीटी गुड आइडिया अबाउट द गेम. सो एंड लेट्स सी हाउ इट प्लेज. आई विल जस्ट कंटिन्यू द गेम नाउ. Okay. So the first pro thing over here is you could already see कि मतलब how fast it was. Like I think इसको almost लगा होगा 3 to 4 seconds to get to the main game. Right. So this is Spiderman Miles Morales. As you could see, game is superbly like beautiful. Like अभी आप यहाँ पे smokes देख रहे हैं, birds fly कर रहे हैं. ड्रॉ डिस्टेंस यहाँ पे बहुत अच्छा है. यहाँ पे पूरे गेम में एज फार एज यू कैन सी आपको यहाँ पे दूर तक यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स एंड वहाँ पे आपको पॉपुलेशन कास्ट सब कुछ दिख रहा है इफ यू कुड सी. राइट. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस गेम इज ये गेम 3 अलग अलग मोड्स पे रन करता है. सो आई विल जस्ट शो यू ये मोड्स कैसे होते हैं. राइट. सो वी गो टू द सेटिंग्स एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विजुअल करके. Right. So right now I'm playing it performance mode, which means कि मेरा game would run at 60 frames per second at 4K. बट यहाँ पे मेरे को कोई फैंसी इफेक्ट नहीं मिलेगा, जैसे कि रे ट्रेसिंग नहीं मिलेगी. लाइक फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन, वाटर रिफ्लेक्शन, पडल्स या जो मिरर्स पे जो हमें रिफ्लेक्शन दिखते हैं वो हमको इसमें बिल्कुल नहीं दिखेंगे. ये बहुत मिनिमम दिखेंगे. सो दैट इज परफॉर्मेंस मोड. वी वुड गेट अ 4K परफॉर्मेंस ओवर हियर. दूसरा वी हैव परफॉर्मेंस RT. RT स्टैंड्स फॉर रे ट्रेसिंग. यहाँ पे ये है कि वी विल गेट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड्स एंड हमको मिनिमम यहाँ पे रिफ्लेक्शन और थोड़ा रे ट्रेसिंग मिल जाएगा, बट द रेजोल्यूशन वुडंट बी 4K ऑल द टाइम. सो दैट इज परफॉर्मेंस रे ट्रेसिंग. एंड देन इट्स फिडेलिटी. फिडेलिटी इज 30 फ्रेम्स पर सेकेंड एट 4K रेजोल्यूशन एंड एवरी फैंसी इफेक्ट्स वुड बी देयर. राइट. सो पर्सनली I like the performance mode because मेरे को to be honest like performance and fidelity में graphic wise there is a very minimum difference. Like you could just see आप इसको तभी देख सकते हैं जब आप साइड बाय साइड इसको कंपेयर कर रहे हैं. राइट. और दूसरा आपको ये केवल तब दिखेगा जब आप केवल क्लोजली रिफ्लेक्शन देख रहे हैं या आप मिरर्स पे आप देख रहे हैं, मिरर्स पे जा रहे हैं, तभी आपको ये रिफ्लेक्शन दिखेंगे. लाइक ड्यूरिंग नॉर्मल गेम प्ले, राइट, व्हेन वी आर फ्लाइंग देयर इज लाइक 19-20 का डिफरेंस दिखेगा. आपको इतना ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क दिखेगा नहीं. सो आई प्रेफर दिस मोड बिकॉज इट्स स्मूथ. लाइक इफ यू आर सीइंग इट 1080p 60 FPS यू कैन टेल द डिफरेंस. इट्स राइट नाउ 60 फ्रेम्स पर सेकेंड एट 4 कैन बिलीव मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है. एवरीथिंग इज लाइक बटरी स्मूथ राइट नाउ. So this is the first benefit or you could say advantage of the game or like a pro of the game is that the game is buttery smooth. और जो वो promise करते हैं you'll get it. If you are getting 4K you'll get. So this is 4K right now at 60 FPS. Right. But यहाँ पे बस like as you could see मैं अगर यहाँ पे मिरर के सामने हूँ तो I won't see my own reflection. Fidelity भी बस ये होगा कि मैं अपनी यहाँ पे अपना खुद का एक reflection देख पाऊँगा. Right. तो दैट इज़ द ओनली स्मॉल डिफरेंस. बट यहाँ पे फिर 30 FPS हो जाएगा. एंड बिलीव मी अगर कोई गेम 60 FPS पे खेलते हैं आपको 30 FPS पे खेलने पे मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा. आई विल शो यू अ लिटिल बिट कि 4K पे और मतलब रे ट्रेसिंग इफेक्ट्स के साथ ये कैसा दिखेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिक्स बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू बी नोटिस इफ यू प्ले द गेम फॉर द फर्स्ट टाइम इज दैट हाउ ब्यूटिफुल दिस गेम इज. जस्ट लुक एट द स्मोक इफेक्ट्स. अगर आप ये गेम PS4 पे खेलेंगे दिस स्मोक इफेक्ट वोंट बी एज सो नाइस. मतलब होगा उस पर भी होगा, आई एम नॉट सेइंग उसमें नहीं होगा,
but the amount of smoke you see over here is just spectacular. So there are small little things you are going to notice which you'll only get at PS5. So graphic wise, I think I'll give this game a 8 out of 10. मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ टू द PS4 वर्जन दैट आई प्लेड, इट वॉज गुड, इट वॉज ऑल्सो ग्रेट ग्राफिकली, बट जो मेन ग्राफिक है, जो इसके मूवमेंट्स हैं, इफ बिसाइड्स अगर हम रेजोल्यूशन और 60 FPS को माइनस कर दें, सो द गेम इज मोर और लेस द सेम ग्राफिकली. सो आई विल गिव द गेम ग्राफिकली एन 8 आउट ऑफ 10. राइट, आपको मैं थोड़े मिशन भी दिखाऊंगा इसमें. इसको एक मिशन जो पर्टिकुलरली मेरे को अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स, आई विल शो यू इन अ लिटिल बिट. So graphic wise this game is good. I won't say it's the best graphical game I've ever played. Like Last of Us 2 on PS4. I've not played on PS5 yet, but I'd say it's still better than Miles Morales. Only pure graphic अगर हम facial animation की बात करते हैं. So graphically this game is good but not great. But still it's a pretty darn good game graphically. Second अगर हम बात करते हैं इसके combat की. So for combat I need to go on a mission. I'll show you the combat too. So हम एक छोटा सा कोई side mission देखते हैं. Let's see. हम पहले कोई side mission देखते हैं. Hopefully we get a mission where we could चलो crimes का कोई mission करते हैं, right? आर्म रॉबरी हुई है कहीं आसपास. So going for the we will see all the transversal, मतलब यहाँ movement हमारा कैसा है. So the small difference here with the PS4 वाला जो स्पाइडरमैन था जिसमें हम एज पीटर खेलते हैं, that he was really professional because उसको स्पाइडरमैन बने हुए काफ़ी टाइम हो गया होता है. एंड ये अभी नया नया स्पाइडरमैन बना हुआ है माइल्स. सो यू कुड सी इसके जो मूवमेंट्स है थोड़े से इम्परफेक्ट है. मतलब इट लुक्स गुड, बट आपको एक इसमें एक फीलिंग आएगा कि इसको अभी ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं है. मतलब थोड़ा सा यू कैन सी इट्स नॉट नेचुरल बिकॉज वो अभी नया नया सीखा. सो दीज आर लिटिल डिटेल्स दैट आर गुड. ये हमारी यहाँ पे है हमारा कॉम्बैट, आपको दिखाता हूँ. सो इट्स मोर और लेस ऑलमोस्ट द सेम. अगर आपने PS4 वाला अपने स्पाइडरमैन खेला है, इट्स मोर और लेस द सेम. वी हैव अ कॉम्बैट बटन, और अगर हमें डॉच बटन है, इफ यू प्रेस द कॉम्बैट डॉच बटन एट द राइट मोमेंट, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा मिलेगा, बूस्ट अप मिलता है. तो दिस इज आवर स्पेशल मूव. तो ये ऐसा मूव है जो आई थिंक दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन. ये तो बहुत छोटा मिशन था बिकॉज आई एम लाइक एक्चुअली एट फुल हेल्थ. सो देयर आर सम मूव्स दैट यू डोंट गेट इन स्पाइडरमैन इन 2018. राइट, यहाँ पे जैसे हमारे पास कुछ पावर्स भी होती है. फॉर एग्जाम्पल वी कुड इवन गो इनविजिबल. सो ये एक पावर है इनविजिबल वाली जो यू वोंट गेट इन स्पाइडरमैन पीटर पार्कर वाला. और जो आपको इलेक्ट्रिक वाला मैंने दिखाया, दैट इज अनदर थिंग. Let's see. Storyline is better, Miles Morales or the original one? I'll say storyline mainly. अगर आप storyline की बात करते हैं Miles Morales और जो 2018 में आया था, so I'd say कि 2018 वाला was better because in terms of character growth and development, the first game was much better, mainly on the story front. But like overall package, this game is small. हम उस पर भी आएंगे कि ये गेम स्मॉल है बड़ा है. विल फर्स्ट आपको मैं थोड़ा सा इसका गेम प्ले हम देखते हैं एक बार. सो स्टोरी वाइज एब्सोल्युटली लाइक फर्स्ट गेम वाज मच बेटर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हमें प्रेजेंट होती हैं. इसमें वी हैव अ सिंपल स्टोरी दैट डजंट हैव सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स. फर्स्ट वाला वाज अ ग्रेट गेम. Alright, let's go with another. हम आपको एक छोटा सा और मिशन दिखाएंगे that I have not played. So let's see, and you can in a while you could say कि transversal इसमें कैसा है. It's absolutely so gorgeous. But yeah, it's the same. लगा अगर आपने Spiderman 2018 खेला है, there is not much जो we are seeing right now. Let's थोड़ा सा हम यहाँ पे फाइटिंग करते हैं. But I can't see anything right now.
Okay, for some reason यहाँ पे I don't see much of an activity. यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है ज़्यादा. So I'm not sure what I'm supposed to do. I gotta check this place with Genki sometime. Smells mad good. Okay, we'll go with a different mission once. Spider-Man, I hope you enjoyed Christmas. So I think for right now, for some reason, हमें ये नहीं मिल रहा. I think this is a game problem. और आई थिंक मेरे को कोई पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे आना है. मे बी आई थिंक दिस मिशन वुड बी अवेलेबल व्हेन आई कम एट नाइट. राइट नाउ इट्स ऑल क्वाइट. Okay, so we'll go with the mission later on because for some reason I'm not sure कि it's not taking the mission, it's all empty. So yes, story-wise, I would say कि story-wise this game is good. There are some moments जो मैं आपको चलो इसके positive story की बताता हूँ. Story is gripping. That the game is almost 8 to 9 hours long. Okay, I'll do that. So story-wise I'd say कि it's around 8 to 9 hours long. And it's gripping. मतलब आप कहीं पे बोर नहीं होगे. बट इट गेट्स रिपीटेटिव एंड इट्स अ लॉट प्रिडिक्टेबल. मतलब जो मैं सोच रहा था कि इसमें कौन विलन होगा, कौन अच्छा होगा, तो दैट वाज मोर और लाइक इट वाज रियली प्रिडिक्टेबल. बट लाइक एनिमेशन कट सीन वाज मेकिंग अप फॉर इट. मतलब इट वाज ग्रिपिंग. सो आई थिंक आई गिव द स्टोरी लाइक अ 7 out of 10. इसमें कुछ चीज़ें ये भी दिखाते हैं, हमारे पास जो पावर्स आती हैं ये बस हमें मिल जाती हैं. लाइक इसका एक कोई प्रॉपर रीज़न नहीं दिखा रहे. फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा ये वाली जो पावर होती है इनविजिबल वाली, we just get it at certain point of time with no point of explanation. We just get it. Same with the जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर होता है, we just get it for some reason without any explanation. Right. Alright, so we would now focus on the NPC. So like you could see that अगर हम पास में जाते हैं NPC के, they would react, they would say Spiderman here. कोई बोलेगा कि हमारे साथ पिक्चर खिंचाओ. So that is certain in even certain times, not all the time. कोई NPC अगर they would say कि please click a picture with us. Sketchy, but man, I can't believe it. Hey, permiso, Spider-Man coming through. Man, I can't believe they had to shut down feasts during the holidays. Oh, nice threads. Gotta catch 'em. So we are interacting with the crowd right now. Hey, what's up? So yeah, ये थोड़ा सा NPC यहाँ पे आप देख सकते हैं how they are interacting with us. I can't believe they were allowed to bring that new form stuff into the city. My feet I'm not thank you for saying the fixing the underground express train. cool. There's no way. Yeah, so NPC wise this game feels really live. Good to see you. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे मिशन करते हैं ड्यूरिंग द गेम प्ले ड्यूरिंग द मेन मिशन, दे वुड नो दैट यू डिड समथिंग गुड. तो आप यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ करते हैं तो यू गेन अ सर्टेन रैप विद पीपल एंड दे नो लाइक आप क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा आप कर रहे हैं. तो दे वुड बी हैप्पी दैट यू आर हेल्पिंग देम विद अ सर्टेन क्राइम और एक्टिविटी. 10 times worse. How you doing? So you could see here is dancing. So these are certain things Spider-Man would do that Peter Parker won't. So these are certain things. Wow. So like combat wise, this game is better. This game is actually better than the main game because there are certain moves that I liked a lot comparing to the original. So combat wise, this game is again an 8. Story wise, I'd say it's like a slightly less. It's like a 7. It's not bad. It's just predictable. ऐसा कुछ certainly नया नहीं है. Boss fights in this game, I'd like कि अगर थोड़े से ज़्यादा boss fights होते हैं यहाँ पे. So for example, we are just getting like mainly I think यहाँ पे 2 boss fights थे that were like really great, right? And they were like 2 or 3 cut pieces, like set pieces as we say, that were amazing. I think कि main Spider-Man में भी उतने अच्छे cut pieces थे नहीं, to be honest. But those were like pretty too less. एंड गेम टाइम एज आई सेड, अगर आप केवल मेन गेम खेलते, जैसे मैं ज़्यादातर मेन स्टोरी पे ही फोकस करता हूँ, so main story was like around 8 to 9 hours long. So it wasn't that bad, it wasn't that long, and you are paying 4,000 rupees for a full game. So वहाँ पे आपको थोड़ा सा यूथ से कि थोड़ा सा ज़्यादा है.
Like for me, even in PS5, this game should not be more than 3,000 or 3,500 rupees. So that is one of the things that I didn't like. बस ये ऐसा है कि अगर आप launch भी ले रहे हैं PS5, so this is the only game that you would buy, and paying 4,000 for that game is a little bit too much. But this is what it is. So आपको यहाँ पे एक मैं कट पीस दिखाऊंगा जो I really liked a lot. So you can consider it a spoiler, but let's see अगर आपको अच्छा लगता है, because I liked it a lot. So इसके लिए हम पहले ऑप्शंस पे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मिशन हम सिलेक्ट करते हैं. इट्स लाइक 10 to 15 minutes, बट इट्स अ रियली कूल मिशन. सो आई जस्ट रिप्ले इट. मैं पहले खेल चुका हूँ, बट यू कुड सी द सेट पीस कि यहाँ पे कैसा है. कंपेयर इफ़ यू रिमेंबर द ओल्ड PS4 स्पाइडरमैन, आपको इस तरह का कट पीस आई थिंक वहाँ पे नहीं मिलेगा, लाइक इंक्लूडिंग द ग्राफिक्स एंड ऑल. You got the house key? Yeah, I got it. Again, the graphics are really great because it's so smooth right now. Little attention to detail. We're gonna be late. The snow is realistic. Miles का जो movement है, it's really good. Facial expression, I am so filling your suit with snow. but yeah, it's not next gen yet. Yeah, just in case. It's gonna be fine. So you could see even without like the special ray tracing effects, if we focus on the ground right now, Pop-up street fair. you could see there is a little bit of reflection. It's not that great, This is pretty cool. but there are certain reflections. So fidelity and performance mode में मेरे को इतना ज़्यादा देखो डिफरेंस लगा नहीं यहाँ पे, honestly speaking. Similar skill So more like ray tracing right now on PS5 is a gimmick, making sure that क्योंकि you won't really notice while you are doing a mission. Because अगर ये ray tracing है तो I was getting the same reflection even on ray tracing fidelity mode. Honey, you're worrying too much. So we'll just go to the mission right now. Like the smoke effects, the snow, सब बहुत अच्छा यहाँ पे है. ये हमारी मॉम है यहाँ पे स्पाइडरमैन की, माइल्स मोराल्स की, और ये एक रैली पे आई है फॉर अ सर्टेन एजेंडा और मिशन. constant vigilance thing, huh? These are the bad guys, Roxxon. Buenas noches, vecinos. Do you remember what we lost when Roxxon bulldozed this block? Hey, you okay? Let me remind you. Yeah, it's just last that time was Photo's we Creamery, did one of these, my dad. home of the best hand-rolled ice cream in New York City. And Junipero's daycare. It'll be okay, man. Your mom's got people looking out for her. See again, facial expression in this game is better than the main game, the 2018 Spider-Man. Even now. So these are the little details जो उन्होंने यहाँ पे improve करा है comparing to the old game. But they won't tell us the risks. मैं ज़्यादा स्टोरी आपके लिए स्पॉइल नहीं करूँगा कि क्या हो रहा है अगर आपको अपनी गेम नहीं खेला है पहले. So you need to figure out the story on yourself because it's playable like once a time, एक बार के लिए game. For the story it's good, but it's not like mind blowing or spectacular. But still I won't be giving any spoilers right now कि क्या हो रहा है story पे. It's just a good set piece or fighting sequence right now. They need you. I'll help your mom. So we would be turning to Spider-Man soon. और यहाँ पे एक little अभी fighting होगा. I got you. Here we are. So यहाँ पे आपको you'd get a good idea how's the combat like. मेन जो इसके जो सिस्टम है फाइटिंग का इज एग्जैक्टली द सिमिलर. यू नीड टू डॉज एट द राइट टाइम. थोड़ा बहुत इफ यू नो इट्स लाइक बैटमैन बट बेटर देन बैटमैन. अब आपको यहाँ पे फिनिशर मूव भी दिखाऊंगा यहाँ पे मैं. सो दिस इज समथिंग लाइक रियली कूल जो पहले स्पाइडरमैन में नहीं था. उसमें भी फिनिशर मूवमेंट है बट यहाँ पे थोड़ा ग्राफिकली उसको थोड़ा सा दिखाने का इन्होंने कोशिश करा है. So this is an attack that old Spider-Man didn't have, but we do have for some reason. बाकी main mechanics, fighting mechanics is almost the same. I'll do it again. We are just getting a few little movements. Miles, we made it home. Not just driving your mom to
ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने इसने अच्छे से मारा, थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्टिंगली उसने मारा, मतलब डिटेल ग्राफिकली आप देख सकते हैं उसने अच्छे से मारा यहाँ पे। Oh shit. I'm logging into your analytics. I'll help how I can. Good idea. And Genki, thanks for helping my mom. Anytime, man. ये आप तब ये वाला पावर यूज करेंगे जब यू आर सराउंडेड बाय लॉट मेनी पीपल। So now we need to go to that place. Alright, one more thing I forgot to tell you is the music of this game. And this is this part where this game shines a lot. The music according to the situation is so great. Come to the hospital. No. It's really nice. Safe. But you're hurt. What if something happens to you while I'm not there? Mijo, this isn't like City Hall. We're all okay. You stay where it's safe. Entiende? I'll be back soon. I'll even let you sign my cast. Okay, ma. Nos vemos en casa. Te quiero. Mom, I saw what just went down. So this is one of the best missions I found. Where are you? And you'll say why. There was an explosion. Alright. But लिटिल अगर आपको बताऊं कि ये वही मिशन है जो आप पहले ही देख चुके हैं यहाँ पे E3 या जब PS5 का जब रिवील हुआ था। Okay. So this gameplay was shown there. But playing right now, Explosion looked bad. it's a good different feeling. Because right now you could see the game in its full glory जो आप YouTube पे नहीं देख सकते। Looks like the plaza was just a warm-up. Like so smooth right now. Or a distraction. Whoa! Let's not shoot each other, all right? Just the music right now according to the situation is pure genius. मतलब जो भी इसका म्यूजिक डायरेक्टर है यहाँ पे जो इसने डायरेक्ट करा है गेम के लिए is pure genius. So music wise I think I'd give this game a 9 or maybe a 9. Yes, it's a 9, definitely a 9. 10 फिर भी नहीं बोलूँगा. 10 is for me is like God of War 3. Get rid of him. Then grab as much as you can carry. So just enjoy the show. Just enjoy this cut piece, friends. He's destabilizing it. Get down! One more thing जो मैं I think अपने हर वीडियो में बोलता हूँ. Another advantage with the PS5 is this DualSense controller. Every movement जो भी गेम में हो रहा है कुछ टूट रहा है so we get a special different kind of vibration. I don't know how they do it but it feels really nice. I'm fine. But did you see the Tinkerer? Finn. God, I saw her today. If I just put everything together. This is not your fault, man. I was so happy. डिफरेंट यहाँ पे आपको एक और इसका मूव दिखाता हूँ. इट्स लाइक अ इलेक्ट्रिक पंच जो मतलब ग्राफिकली देखने में बहुत अच्छा लगता है. नाइस. ये कौन बच्चा है? Okay, nice. So this is the beginning of the cut piece that I was talking about, which most probably you might have seen, but playing it live on the PS5 is a special feeling. Right now जैसे ये wires जा रहे हैं right to left, I could feel that on my DualSense controller. Like something is happening.
the same feeling. Gotta get people off the bridge before it comes down. Let's see. Nice. And the good thing about this game is जो उन्होंने E3 पे या जो उन्होंने अपने गेम शोकेस में दिखाया अब तो गेम नॉर्मली क्या होता है जो आप देखते हैं वो होता है नहीं राइट यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्टली जो दिखाया वो ही हुआ है अब देयर इज नथिंग नो चेंज जो उन्होंने दिखाया इट्स एग्जैक्टली द सेम एंड आई थिंक इवन बेटर देन व्हाट इट इज शोड लाइक ग्राफिकली Don't worry, I got you. such a grand scale. Those people, they're trapped. Like this is just one of the one or two, three examples. Even the main game of the Spider-Man didn't have such a grand cut piece. वहाँ पे शायद एक था, if you remember, the helicopter scene. So that was just one I think that I remember. But still the scale, इसका जो scale है, उससे कहीं ज़्यादा on a larger scale. I need something they can cross. Oh shit. नाइस ये हमारा स्पाइडरमैन का क्लासिक मूवमेंट जब वो पुराने स्पाइडरमैन मूवी में जो ट्रेन रोकता है दिस इज द सेम थिंग राइट नाउ और उसका एक ये सॉन्ग स्पाइडरमैन का दैट एवरीवन नोज just look at everything right now the scale the sheer thing happening at the screen right now is great and just believe me it's the first year of PS5 और जैसे जैसे इसका PS5 का लाइफ साइकिल बढ़ेगा it's even greater things right PS5 started with knack and ended with Last of Us Part 2 graphic wise मैं आपको एक लीप बता रहा हूँ same is going to happen with PS5 as well. So this was one of the best missions that I liked in the game. Right. So what do I think about the game? See अगर आपने PS5 अभी ले रखा है most probably आप ये गेम ले चुके होंगे right but if for some reason आप नहीं ले पाए and you are planning to buy a PS5 in the future I think you should go with the PS4 version because I think you'd get less than 3500 सबको या around 3000 में वो आपको मिल जाएगा even you could go with the second hand game PS5 version में ये है disc version में कि that there is no like second hand game so you have to buy the new game that is 4000 rupees for just this game which is like 7 to 8 hours long depending आप क्या क्या खेलते हैं इसमें so I think if you go with the PS5 soon better buy the PS4 version and just upgrade it to the PS5 version और जो वो फ्री होगा उसमें आपका कोई कॉस्ट भी नहीं लगेगा right but this is one of the game I think everyone is going to buy with their brand new PS5 because at the moment PS5 पे graphically ज़्यादा दिखाने को कुछ है नहीं I'm talking about the exclusives right so this is a good game as an entry point it's much better than Xbox has to offer right now exclusive wise I'm saying और फन वैल्यू इस गेम में है बहुत सो माई ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू वुड बी दिस इट्स अ वन टाइम बाय यू वोंट रिग्रेट दिस गेम बिकॉज यू आर बाइंग इट फॉर योर PS5 और अभी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है नहीं बट इफ यू हैड लाइक 10 चॉइसेस 11 चॉइसेस तब मैं बोलता कि यू शुड वेट फॉर दिस गेम टू गेट चीपर बट राइट नाउ आई थिंक दिस इज अ मस्ट गो एंड माई रेटिंग फॉर दिस गेम वुड बी a 7 out of 10 so it's not a bad game it's not a great game but right now I think it's the best game on the PS5 exclusive wise there are many good games you could play so this is one of the few good games that I think you would really enjoy बस ये इसकी छोटी मोटी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये थोड़ा बहुत एक्ट कर रहा है लिटिल नुआंसेस अगर आप देखें इट्स लाइक रियली नाइस बाकी yeah this was my first video review
ऑफ अ गेम, वीडियो गेम, लाइक ऑफिशियली. वैसे गेम रिव्यूज तो हम सभी करते हैं, बट टू बी एक्चुअली टेलिंग यू गाइज अबाउट दिस फील्स नाइस. सो बहुत मज़ा आया मेरे को ये वीडियो बनाने में. समथिंग आईड लाइक टू डू सम डिफरेंट वीडियोज़ ऑल द टाइम. कभी हम गेम प्ले भी करेंगे, कभी हम सैक बॉय का भी गेम डालेंगे, कभी हम आपको और दूसरे गेम दिखाएंगे. सो राइट नाउ दिस इज़ इट फॉर मी. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, कमेंटिंग ऑन इट. अगर आपको कुछ लगता है मैं वीडियो में आगे, आई एम जस्ट डूइंग live streaming right now as of now because this is the only mean I could send videos to YouTube. So if you have any feedback for me, any kind of feedback would be appreciated. Constructive or destructive, jaisa bhi hoga, it would be highly appreciated, right? So please consider subscribing, liking this video. Game Night 1 is my handle. Please do like, comment the video, share कर सकते तो please share it because अभी reach मेरी बहुत ही कम है, but still we have a start right now. So अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, please consider sharing and spreading the love and the joy with this new video channel that I'm bringing you. So thanks everyone, and I hope you have all a good day. Bye.